Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. So let's start our today's lecture, which is all about chemicals and reagents and their classification. So this is pure chemistry. Again, you can define a chemical as a substance which is a form of matter having constant chemical composition and characteristic properties. यानी कोई भी जो केमिकल आपके पास है, you can easily go for its physical and chemical properties. और जब यही केमिकल आप किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं just to cause another change or an effect, then it can be called as a reagent. So we can define reagent as a compound or mixture that is added to a system to cause a chemical reaction for test, or a reagent takes part in a chemical reaction and is converted to something else. यानी जो भी चीज़ आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन को कॉज करती है या कोई चेंज लेके आती है, तो दैट कैन बी कॉल्ड अ reagent. And a reagent may also be used to tell the presence or absence of a specific chemical substance by causing a reaction with it. आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई हम कर सकते हैं जस्ट बाय रिकलेक्टिंग द एफएससी प्रैक्टिकल, जिसमें आप सॉल्ट एनालिसिस करते थे और एंड में आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना होते थे जस्ट टू श्योर द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड और द बेसिक रेडिकल. तो वो सारे के सारे हमारे पास के केमिकल रिएजेंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं. नेक्स्ट अब आप आ जाएं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई द केमिकल्स. सो बेसिकली जो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी. और जो प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, और उसके मुताबिक हम इनको सिंपली 7 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो आपके पास ग्रेड आता है, दैट वुड बी ACS ग्रेड. एंड ACS स्टैंड्स फॉर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी. American Chemical Society है, basically it's a scientific society which is based in the United States, and it supports scientific inquiry in the field of chemistry. तो इसने जो हमें एक ग्रेड दिया है वो कहलाएगा ACS ग्रेड, और हम कह सकते हैं कि दिस इज द हाईली प्योरिफाइड form of chemicals. So it is useful for high quality work and is acceptable for food, drug or medicinal use, and can be used for ACS applications that require purity of 90 equal to or greater than 95%. यानी जहाँ पे भी आपको हाई क्वालिटी प्योरिटी चाहिए होगी या हाई क्वालिटी वर्क चाहिए, मतलब रिसर्च वर्क हो गया किसी भी तरह का, तो वहाँ पे जो केमिकल्स यूज किए जाएंगे, दैट शुड बी ACS ग्रेड. देन वी हैव रिएजेंट ग्रेड, और ये जनरली इक्वल होता है ACS ग्रेड के, मतलब लिटरली बराबर ही होता है. एंड दिस इज अगेन एक्सेप्टेबल फॉर फूड, ड्रग और मेडिसिनल यूज एंड इज सूटेबल फॉर द यूज इन मैनी लेबोरेटरी एंड द एनालिटिकल एप्लीकेशंस. ग्रेडिंग का फिनोमेना सिंपल यही है कि जहाँ पे भी आपको रिसर्च करनी होती है, जो कि जैसे आप देखें फूड की रिसर्च है, या ड्रग सेंटर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या मेडिसिन हैं, तो उन तमाम जगहों पे हमें हाई क्वालिटी केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो वी कैन गो फॉर द ACS ग्रेड और रिएजेंट ग्रेड. जब आप इनसे लोअर क्वालिटी वर्क करते हैं, जिस तरह आम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं या कोई भी आम टेक्निक्स हैं, तब वी कैन यूज अदर ग्रेड्स विच विल बी ऑफ लो क्वालिटी एज कम्पेयर टू दीज ACS ग्रेड्स और द रिएजेंट ग्रेड. Next, we have a USP grade, and again, this is a chemical grade of sufficiently high purity to meet or exceed requirements of the United States Pharmacopoeia, which is abbreviated as USP. Now again, US Pharmacopoeia जो है वो एक NGO है, यानी नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, that sets standard in pharmaceutical manufacturing और फूड सप्लीमेंट्स. तो अब ये दोनों ही चीज़ें, यानी चाहे आप फूड सप्लीमेंट मार्केट में डिलीवर करें या मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सो दे बोथ रिक्वायर हाई क्वालिटी केमिकल्स. सो मोस्टली हम इन पर्पसेस के लिए USP ग्रेड केमिकल्स को यूज़ करेंगे. एंड अगेन दिस ग्रेड इज एक्सेप्टेबल for food, drug or medicinal use. It is also used for most laboratory purposes. The next grade is NF grade, and again it's of sufficient purity to meet or exceed requirements of the United States National Formulary. NF है, that stands for National Formulary. And what is a formulary? Formulary जो basically होती है, that will contain a collection of formulas for the compounding and testing of medicines. यानी किसी भी जगह पे जो भी medicines या pharmaceutical manufacturing industries होती हैं, तो they can consult any formulary to prepare any kind of drug. उनके पास सारे के सारे केमिकल के कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं.
अच्छा, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएसपी और एनएफ, ये कंबाइन भी काम करती हैं और उन्हें अगेन दे कैन आल्सो पब्लिश अ बुक ऑफ जर्नल इंटरेस्ट, जिसमें उन दोनों ने अपने फार्मूलाज और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को यकजा किया है, तो वो एक अलग ग्रेड बन सकता है। तो यूएसपी एंड एनएफ, दैट इज यूएसपी एनएफ jointly publish a book of public pharmacopoeial standards for chemical and biological drug substances, dosage forms, compounded preparations, excipients, medical devices and dietary supplements. इन दोनों का joint venture है। जो नेक्स्ट ग्रेड है हमारा, वो है आपके पास लेबोरेटरी ग्रेड, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ग्रेड फॉर यूज इन द एजुकेशनल एप्लीकेशंस, बट इट्स एग्जैक्ट लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज आर अननोन। मतलब है ये नॉर्मल यूटिलाइजेशन के लिए केमिकल्स हैं और इनमें कितनी इम्प्योरिटीज हैं उसका कोई ख़ास लेवल मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि ये जनरल वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आपके क्लासेस में, मतलब है कॉलेजेस लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे जो है, दे कैन बी यूज्ड। While excellent for teaching and training, it is not pure enough to be offered for food, drug or medicinal use of any kind. अब क्योंकि इनमें हमारे पास जो impurity standard है उसको जज करने का कोई मेथड नहीं है, तो इसीलिए हम इन केमिकल्स को वी कैन नॉट ऑफर देम फॉर फूड, ड्रग और मेडिसिनल यूज। इसके अलावा जो भी आपके पास जनरल वर्क है, टीचिंग एबिलिटीज यानी फैसिलिटीज हैं, या फिर आपके पास जो नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्क है, दे कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। Then we have purified grade. It is also known as the pure or practical grade, and it indicates good quality chemicals meeting no official standard. Means the quality of the chemicals would be good, लेकिन अगर आप कहें कि वो किसी standard को match करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, and they can be used in most cases for educational applications, but they are not pure enough to be offered for food, drug or medicinal use of any kind. Next, we have the technical grade. Again, this is a good quality chemical grade used for commercial and industrial purposes, but it is not pure enough to be offered for food, drug, or medicinal use of any kind. So, this is a list of chemicals, which classification of the chemicals, which was based on their purity. साथ ही हमारे पास grades थे। अब इसमें जनरली अगर हम बात करें तो देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ग्रेड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। एसीएस रिएजेंट एंड यूएसपी एनएफ ग्रेड्स आर टिपिकली इक्विवेलेंट, यानी वो बराबर ही हैं, एंड इंटरचेंजेबल, यानी आप इनको तीनों को अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फूड, ड्रग और मेडिसिनल पर्पसेस, जबकि लैब प्योरिफाइड एंड टेक्निकल ग्रेड्स हैव देयर ओन यूजेस। फॉर एग्जांपल, लैब ग्रेड chemicals, because of their low cost and good chemical purity, are used widely in the educational applications, such as teaching laboratories at both the secondary school and college levels. However, lab-grade chemicals would not be appropriate for the use in the quality control, यानी QC laboratories of a pharmaceutical or medical device manufacturer. वो अच्छी क्वालिटी के तो होते हैं, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती कि आप किसी भी QC लेबोरेटरी में, यानी जहाँ पे आपने एक सेट स्टैंडर्ड को मैच करना है, वहाँ पे आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। So it's a brief introduction about the chemicals and reagents. And let's move on for a task for all of you. इसमें आपको करना क्या है कि I have written the chemicals and just you have to make a list or a table including these chemicals जो कि organic compounds की detection के लिए utilize कर सकते हैं. And you just have to make a list of the following most frequently used chemicals for the organic analysis in laboratory, and you have to make sure that to form a table including the test for the organic compounds and its observation. ये जो chemicals हैं, they include alcohols, then we have aldehydes, aromatic aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters, amines हैं, alkenes हैं और alkynes हैं. You just have to write and form a table, और एक साइड पे अभी इस केमिकल को लिखें और इसके बाद नेक्स्ट में आप एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, मतलब यू हैव टू राइट डाउन द टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल, और जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आप अपना इन्फ्रेंस निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, जिस तरह आप एफएससी में करते थे कि किसी भी केमिकल को लेके 4-5 उसके टेस्ट लिखा करते थे और उसके बाद आप उससे इन्फर करके कंफर्म किया करते थे कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट यू कम टू नो दैट योर पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड इज अल्कोहल और इट कैन बी अ कीटोन और एस्टर. So just like that you have to write all these chemicals in a tabulate form, और उसके बाद आप ये जो असाइनमेंट होगी
बॉयज़ की तरफ से भी एक कर लें और गर्ल्स की तरफ से भी एक ही कंबाइंड फॉर्म में कर लें एंड सबमिट दैट टू योर सीआर एंड टीआर एंड दे विल कन्वे इट टू मी। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस then again you can contact me through your CR or GR. Thank you very much.